Bismillahirrahmanirrahim. The last address of the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. All glory be to Allah. तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है. There is no God but Allah. अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है. And Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the prophet of Allah. और Muhammad sallallahu alaihi wasallam अल्लाह के रसूल हैं. Rose the cry from the heart of the prophet. ये पुकार नबी के दिल से बुलंद हुई and mingled with the vast expanse of the desert of Arabia. और सराय अरब के वसी और रीज इलाके में गुल मिल गई. Muhammad sallallahu alaihi wasallam was born on Monday, the 12th Rabiul Awwal, 20th April in the year AD 571. Muhammad sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awwal 20 अप्रैल 571 ईस्वी में पैदा हुए. He belonged to the family of Quraysh, the nobility of Arabia. आप अरब के शरफा कुरैश के खानदान से ताल्लुक रखते थे. His family is traced back to Hazrat Ismail अलैहिस्सलाम and Ibrahim अलैहिस्सलाम. आपका शजरा नसब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है. His parents died by the time he was 6 years of age. आपके वालिदैन फौत हो गए थे जब आप 6 साल के थे. His grandfather अब्दुल मुत्तलिब took charge of him. आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब ने आपका जिम्मा लिया. But he also died soon. लेकिन वो भी जल्दी फौत हो गए. Now the responsibility of looking after the Prophet sallallahu alaihi wasallam fell to his uncle Abu Talib. अब नबी पाक sallallahu alaihi wasallam की देखभाल की जिम्मेदारी आपके चाचा अबू तालिब पर आ गई. He loved his young nephew dearly. आप अपने छोटे भतीजे से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते थे. And did all, और वो सब कुछ किया. He could to rear him well, जो वो आपको अच्छे तरीके से पालने के लिए कर सकते थे. The Prophet sallallahu alaihi wasallam grew up to be so honorable and trustworthy. नबी पाक sallallahu alaihi wasallam इतने ईमानदार और दयानतदार जवान हुए that people called him Al-Amin, के लोग आपको Al-Amin कहते थे. The Prophet sallallahu alaihi wasallam used to retire to and pray in a cave in Mount Hira for some days every year. नबी पाक sallallahu alaihi wasallam हर साल चंद दिन हिरा पहाड़ के गार में किनारा कश हुआ करते थे और इबादत किया करते थे. During the last days of Ramadan, रमजान के आखिरी दिनों के दौरान the most wonderful thing happened to him. आपके साथ इंतहाई अजीब और गरीब मामला पेश आया. Through the angel Gabriel, फरिश्ते जबरील के जरिए Allah revealed to him the true religion. अल्लाह ने आप पर सच्चा मजहब नाजिल किया. इस्लाम इस्लाम द बिलीफ इन द टोटल सबमिशन टू वन, एक के लिए तमाम अतात पर यकीन. ट्रू एंड द ओनली अल्लाह, जो हकीकी और वाहिद अल्लाह है. द मोस्ट मर्सीफुल एंड द माइटी, जो इंतहाई रहीम और ताकतवर है. Thereafter the Prophet sallallahu alaihi wasallam spared no effort in preaching the true religion. इसके बाद नबी पाक sallallahu alaihi wasallam ने सच्चे मजहब की तबलीग में कोई कसर न छोड़ी. He suffered great hardships. आपने बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की. But nothing could move him from his chosen path. लेकिन कोई चीज भी आपको अपने मुंतखब करदा रास्ते से हटा न सकी. Hundreds of people embraced Islam at the hands of the noblest of men. सैकड़ों लोगों ने इंसानों में से नेक तरीन इंसान के हाथों इस्लाम कबूल किया. When the Prophet sallallahu alaihi wasallam realized, जब नबी पाक sallallahu alaihi wasallam समझ गए that his end was drawing near, कि आपका वसाल करीब आ रहा है, he felt the intense need of conveying to the people his final message. तो आपने लोगों तक अपना आखिरी पैगाम पहुंचाने की शदीद जरूरत महसूस की. Before performing his last pilgrimage at Makkah, मक्का में अपना आखिरी हज अदा करने से पहले he decided to address the faithful. आपने अहले ईमान से खिताब करने का फैसला किया. While riding on a she camel near the Jabal al-Arafat, Jabal al-Arafat के करीब ऊंटनी पर सवार शुदा. The Prophet sallallahu alaihi wasallam spoke these unforgettable words on the 9th day of Zulhijjah to the assembled people. नबी पाक sallallahu alaihi wasallam ने जुल्हज्जा के 9वें दिन जमा शुदा लोगों से ये नकाबले फरामोश अल्फाज कहे. Listen to my words, मेरी बात सुनो. For I do not know, क्योंकि मैं नहीं जानता. Whether I shall be granted another year to be amongst you, आया मुझे आपके दरमियान एक और साल अता किया जाएगा. Your lives and property are a sacred trust among yourselves until you appear before the Lord. आपकी जानें और माल आपके पास रब के सामने हाजिर होने तक एक मुकद्दस अमानत है. And remember, और याद रखो, you shall have to appear before your Lord. आपको जरूर अपने रब के सामने हाजिर होना होगा. Who shall demand from you an account of all your actions, जो तुमसे तुम्हारे तमाम अमाल के हिसाब का जरूर मुतालबा करेगा. You have rights over your wives, तुम अपनी
اپنی بیویوں پر حقوق رکھتے ہو, اینڈ یور وائف ہیو رائٹس اوور یو, اور تمہاری بیویاں تم پر حقوق رکھتی ہیں. ٹریٹ دیم ود کائنڈنس اینڈ افیکشن, ان کے ساتھ مہربانی اور محبت سے سلوک کرو. بی فیتھفل ٹو ایچ ادر, ایک دوسرے کے ساتھ وفادار ہو جاؤ. اینڈ ڈو ناٹ کمٹ سنس, اور گناہوں کا ارتکاب مت کرو. انٹرسٹ آن لونز از فاربیڈن ٹو یو, قرضوں پر سود تمہارے لیے منع ہے. نو مرڈرز کمیٹڈ ڈیورنگ دا ڈیز آف اگنورینس آر ٹو بی اوینج, دور جاہلیت میں کیے گئے قتلوں کا کوئی انتقام نہیں ہے. ڈو ناٹ فارگیٹ, مت بھولو, دیٹ ایوری مسلم شوڈ بی ٹرولی اے برادر ٹو ایوری ادر مسلم, کہ ہر مسلمان کو دوسرے مسلمان کا سچے دل سے بھائی ہونا چاہیے. There is no preference for the Arab over the non-Arab or the non-Arab over the Arab. عربوں کو اجمیوں پر کوئی برتری نہیں ہے, یا اجمیوں کو عربوں پر کوئی برتری نہیں ہے. Feed and clothe your slaves, اپنے غلاموں کو کھلاؤ اور پہناؤ. with such food as you eat yourself, ایسا کھانا جیسے تم خود کھاتے ہو. and with such clothes as you wear yourself, اور ایسے کپڑے جیسے تم خود پہنتے ہو. if they commit a fault, اگر وہ ایک ایسی غلطی کریں which you find hard to forgive, جسے تم معاف کرنا دشوار پاؤ. let them go away, تو انہیں جانے دو. and do not treat them harshly, اور ان کے ساتھ ظالمانہ سلوک نہ کرو. be kind and just to everyone, ہر ایک کے ساتھ مہربان اور عادل ہو جاؤ. او پیپل, اے لوگو, ہیو آئی فلفل مائی مشن, کیا میں اپنا کام پورا کر چکا ہوں. ان ٹروتھ یو ہیو, یقیناً آپ اپنا مشن پورا کر چکے ہیں. ریپلائی دا 100,000 ماؤتھ آف دا پلگرمز, 1,00,000 حجاج نے جواب دیا. او اللہ, بی داؤ مائی وٹنس, اے اللہ تو میرا گواہ ہونا. سید دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا.